Neural control, neural control and coordination. As you know, the functions of the organ systems in our body must be coordinated to maintain homeostasis. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of one another. For example, when we do physical exercise, the energy demand is increased for maintaining and increased muscular activity. The supply of the oxygen is also increased. The increased supply of the oxygen necessitates an increase in the rate of the respiration, the heartbeat, and the increased blood flow via blood vessels. When physical exercises stop, the activities of the nerves, lungs, heart, and the kidney gradually return to their normal conditions. Thus, the functions of the muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney, and the other organs are coordinated while performing the physical exercises. In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. In our body, coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of two or more organs interact and complement the functions of one another. For example, physical exercise, all that the functions of the muscles are between. Therefore, in our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ. Jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. The neural system provides an organized network of point-to-point connection. The neural system provides an organized network of point-to-point connections for a quick coordination. Point-to-point connection for a quick coordination. The endocrine system provides chemical integration through hormones. Point-to-point connection through the for quick coordination होती है through neural system की वजह से कोई coordination होती है और हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से जो coordination होती है वो slow coordination होती है. Slow coordination with the help of the hormones. And the endocrine system provides chemical integration through the hormones. In this chapter, you will learn about the neural system of the human, mechanism of the neural coordination, light transmission of the nerve impulse conduction across a synapse, and the physiology of the reflex action. The main in the introduction part, the definition of the coordination is main. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of one another. Interact and complement the functions of one another. In our body, neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs. न्यूरल सिस्टम की कोऑर्डिनेशन क्विक होती है एंड द एंडोक्राइन की कोऑर्डिनेशन स्लो होती है. न्यूरल सिस्टम की कोऑर्डिनेशन थ्रू पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ द न्यूरॉन्स एंड क्विक कोऑर्डिनेशन होती है. एंड एंडोक्राइन सिस्टम की कोऑर्डिनेशन थ्रू द हार्मोन्स होती है. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट. Neural system. The neural system of all animals the neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons, which can detect, receive, and transmit the different kinds of stimuli. Which can detect, receive, and transmit the different types of the stimuli. The neural organism is very simple in lower invertebrates. For example, in hydra, it is composed of a network of neurons. The neural system is very simple in lower invertebrates like hydra में simply होती है. Neural system is composed of network of neurons. The neural system is better organized in insects, whereas the brain is present along with the number of the ganglia. Insects में brain present होता है along with the number of ganglia and neural tissues. The vertebrates have more developed neural system. जितना हम classification में जितना हम hierarchy में ऊपर पर जाते हैं उतना neural system ज़्यादा complex और ज़्यादा developed बनता है. For example, hydra में simple होता है neural system में neurons एंड न्यूरल सिस्टम इसी तरह इंसेक्ट्स में थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है न्यूरल सिस्टम, जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है और उसके साथ कुछ गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं. वर्टिब्रेट्स में उससे भी अच्छे डेवलप्ड. न्यूरल सिस्टम में क्या क्या, न्यूरल सिस्टम में हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स आते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जिनको एबिलिटी होती है डिटेक्ट रिसीव. एक तो डिटेक्ट करते हैं, फिर रिसीव करते हैं, फिर वो ट्रांसमिट करते हैं, वही स्टिमुलस फिर ट्रांसमिट करते हैं वही स्टिमुलस. Neurons are the specialized cells which can detect, receive, and transmit the stimulus, which can detect, receive, and transmit the different kinds of stimuli. हाइड्रा में सिंपली होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरल. इंसेक्ट्स में होता है प्रेजेंट ब्रेन with a number of the ganglia and neural tissue. The vertebrates have a more developed neural system. The vertebrates have a more developed neural system. The human neural system comprises of the two parts, the central nervous system and the peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord and the site of information processing and control. Central nervous system consists of brain and spinal cord and is the region of the information processing and control. Peripheral nervous system comprises of all the nerves of the body associated with the central nervous system. All the nerves of the body come to the peripheral nervous system consists of all the nerves of the body associated with the CNS, that is brain and spinal cord. The nerves are afferent nerve fibers and the efferent nerve fibers carry impulses from the afferent nerve fiber, transmit impulses from the tissues to the CNS, and the efferent nerve fiber transmit the regulatory impulses from the CNS to the concerned peripheral. Therefore, efferent nerve fiber transmits sensory impulses from the tissues to the CNS, and
Efferent nerve fibers transmit regulatory impulses from the CNS to the target organ, from the CNS to the peripheral tissues of the target organ. Central nervous system में आते हैं brain and spinal cord, and is the region of the information control and processing and control and processing. Peripheral nervous system में आते हैं neurons associated with the central nervous system. Two types of neurons in the efferent nerve fibers and the efferent nerve fibers करते हैं transmit sensory impulses from the tissues to the CNS, while as the efferent nerve fibers transmit the regulatory impulses from the CNS to the effector organ or the peripheral organ or tissue. The PNS is further classified into the somatic and the somatic neural system and the autonomic neural system. Somatic neural system, somatic as for skeletal. Somatic neural system is closely associated with the skeletal muscle. The somatic neural system relays the impulses from the CNS to the skeletal muscle, while the autonomic neural system transmits impulses to the CNS to involuntary organs and smooth muscles of the body. Whereas autonomic neural system transmits impulses to the involuntary and the smooth muscles of the body. Involuntary and the smooth muscles organs of the body. Involuntary organs and the smooth muscles of the body. Autonomic nervous system. इसके अलावा the autonomic nervous system is further classified into the sympathetic and the parasympathetic neural system. Sympathetic neural system हमारा उस वक्त sympathetic neural system वो functions का एक्टिवेट करता है. फॉर एग्जांपल जब हम किसी शेर को देखते हैं उस वक्त जो जो हमारी बॉडी में चेंज आते हैं, लाइक हमारा पिपल डायलेट हो जाता है, हमारी पाइलो इरेक्शन होती है. पाइलो इरेक्शन का मतलब होता है हमारे जो हियर्स होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज, हमारी रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाती है. ये सारी फंक्शन जो कंट्रोल करता है दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. इसका अपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. दोनों ही नर्वस सिस्टम होते हैं टाइप्स ऑफ part of autonomous neural system. Autonomous neural system release impulses associated with the visceral or associated with the involuntary organs and involuntary muscles. Visceral muscles, involuntary organs and visceral muscles of the body or nervous sympathetic. इसके अलावा होता है visceral neural system, which is also the part of the PNS. Peripheral neural system comprises of whole complex of nervous fibers, ganglia and plexus. NFGP: nervous fibers, ganglia and plexus. Nervous fibers, ganglia and plexus. Nervous fibers, ganglia and the somatic. The visceral nervous system is the part of the peripheral nervous system, comprises of the nervous fibers, ganglia and plexus. ये आया है क्वेश्चन. nervous fibers, ganglia and plexus. nervous fibers, ganglia and plexus, by which the impulses travel from the central nervous system to the visceral and from visceral to the central nervous system. visceral nervous system. अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है CNS और PNS. CNS में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, PNS में आता है efferent nerve fibers. फिर PNS को फिर से डिवाइड करते हैं into the somatic neural system and the autonomous neural system. somatic neural system skeletal muscles की impulses को कंट्रोल करता है. autonomous neural system करता है कंट्रोल involuntary organs और smooth muscles of the body. फिर autonomous neural system होता है दो पार्ट्स में डिवाइड, somatic sympathetic neural system and the parasympathetic neural system. visceral neural system is also the peripheral neural system. इसमें आते हैं nervous fibers, ganglia and the plexus. It is associated with the visceral organs. It is associated with the visceral organs. ये हमारा neural system. अब हम पढ़ेंगे structure of the neuron. Structure of the neuron. Neuron is a structural and the functional unit of the neural system. And neuron is a microscopic structure composed of three major parts: dendrites, cell body or axon. Dendrites, cell body or axon. Cell body, dendrites and axon. Cell body को soma भी कहते हैं. Cell body, that is main body. Cell body, dendrites and axon. The cell body contains cytoplasm with the typical cell body is सिंपली सेल. इसमें होंगे टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे एंड कुछ ग्रैनुलर बॉडीज होते हैं जिनको हम निजुलस ग्रैनुल्स कहते हैं. निजुलस ग्रैनुल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? डेंड्राइट्स में भी निजुलस ग्रैनुल्स होते हैं और सेल बॉडी में भी निजुलस ग्रैनुल्स होते हैं. सेल बॉडी में टिपिकल साइटोप्लाज्म होता है, टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. इसके अलावा कुछ ग्रैनुलर बॉडीज होते हैं जिनको हम निजुलस ग्रैनुल्स कहते हैं. जो सेल बॉडी होती है इससे निकलते हैं छोटे छोटे फाइबर जो फिर प्रोजेक्ट करते हैं फर्दर, उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं. वो एक सेल बॉडी से बहुत सारे डेंड्राइट से एक डेंड्राइट निकलता है, फिर वो आगे पढ़ेगी कितने डेंड्राइट्स निकलेंगे. मेजॉरिटी ऑफ द न्यूरॉन्स हैव मोर देन वन डेंड्राइट्स दैट प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेल बॉडी. स्मॉल शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट फाइबर्स होते हैं. डेंड्राइट्स की फंक्शन होती है वो ट्रांसमिट करते हैं impulses towards the cell body. वो ट्रांसमिट करते हैं impulses towards the cell body. डेंड्राइट्स ट्रांसमिट impulses towards the cell body. डेंड्राइट्स में भी कुछ निसल्स ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है दैट इज द एक्शन. एक्शन होता है एक लॉन्ग फाइबर होता है, उसका जो डिस्टल एंड होता है वो ब्रांच होता है. हर कोई ब्रांच फिर टर्मिनेट होता है इंटा बाल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं. उनमें साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, उन साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में तीन पार्ट्स आते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्शन. सेल बॉडी होती है मेन बॉडी ऑफ द न्यूरॉन जिसमें साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं एंड कुछ निजल्स ग्रैन्युल्स होते हैं. उसके बाद डेंड्राइट्स होते हैं शॉर्ट फाइबर जो प्रोजेक्ट करते हैं. डेंड्राइट्स होते हैं शॉर्ट फाइबर जो प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी. डेंड्राइट्स में भी निजल्स ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं. डेंड्राइट्स करते हैं ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी. उसके बाद आता है एक्शन. एक्शन इज अ लॉन्ग फाइबर. एक्शन इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड, जिसका डिस्टल एंड ब्रांच होता है. हर एक ब्रांच एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं. साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं. उन साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं. उन साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं.
The axons transmit nerve impulses away from the cell body to a synapse. Synapse मतलब वो synapse is a junction formed by a neuron and a neuron or a neuromuscular junction जिसको हम न्यूरॉन और मसल सेल न्यूरॉन और मसल के दरमियान जो जंक्शन बनता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड पैलेट कहते हैं. न्यूरॉन और न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन बनता है उसको साइनेप्स कहते हैं. एक्शन की फंक्शन होती है वो ट्रांसमिट करते हैं impulse away from cell body, away from cell towards synapse or towards a neuromuscular junction. The axon transmit nerve impulses away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular junction based on the number of the axon and dendrites. Neuron are divided into three types: multipolar, bipolar and unipolar. Multipolar axon always एक ही होता है. Multipolar न्यूरॉन हो, unipolar न्यूरॉन हो या bipolar न्यूरॉन हो, axon always एक ही होता है. अगर मल्टीपोलर मतलब एक एक्शन बहुत सारे डेंड्राइट्स. मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब होता है एक एक्शन और बहुत सारे डेंड्राइट्स, दो या दो से ज़्यादा. फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. मल्टीपोलर न्यूरॉन इज फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सेकंड वन इज बाइपोलर न्यूरॉन. बाइपोलर न्यूरॉन में एक एक्शन होगा और एक डेंड्राइट होगा. एक एक्शन होगा एक डेंड्राइट होगा, उसको कहेंगे हम बाइपोलर न्यूरॉन. इट इज फाउंड इन द रेटिना ऑफ द. तीसरा है मल्टीपोलर यूनिपोलर. यूनिपोलर न्यूरॉन में खाली एक एक्शन होता है, उसमें डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होता है. इट इज फाउंड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है. मल्टीपोलर न्यूरॉन बाइपोलर न्यूरॉन होता है. बाइपोलर हम सेल्स जो पढ़ते हैं हम रेटिना ऑफ द आई वहाँ पे. Bipolar neuron with one axon and one dendrite found in the retina of the and the unipolar neuron cell body with one axon found usually in the embryonic stage. There are two types of the axons, namely myelinated and non-myelinated. The myelinated nerve fibers are enveloped with the Schwann cells which form a myelin sheath around the axon. The gaps between the two adjacent myelin sheaths are called as the nodes of the brain. Where myelinated nerve fibers are found in spinal and the cranial nerves. Myelinated nerve fibers are found in spinal and cranial nerves. Unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form myelin sheath. Is enclosed by a Schwann cell that does not form the myelin sheath around the axon and is commonly found in the autonomous and the somatic neural system. Autonomous and the somatic neural system. There are two types of the axon, namely myelinated and non. The myelinated nerve fibers are enclosed by the Schwann cells that form the myelin sheath. The region, the gap is between the two myelin sheath is called as the node of Ranvier. नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स वो होते हैं जिनमें श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो माइलिन शीट नहीं बनाते, उनको हम अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहते हैं. माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं इन द स्पाइनल एंड द क्रेनियल नर्व्स व्हाइल एज नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन द ऑटोनॉमस एंड द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. ऑटोनॉमस एंड द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम दैट इज पीएनएस में पाए जाते हैं. पीएनएस में, सीएनएस में दैट इज क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व में पाए जाते हैं. कौन माइलिनेटेड नर्व में नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं. न्यूरॉन सेल बॉडी से इसमें ज़्यादा याद रखना है सेल बॉडी में क्या क्या होता है. सेल बॉडी में टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, सेल ग्रैन्यूल सेल साइटोप्लाज्म और कुछ निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं. डेंड्राइट्स बहुत सारे हो सकते हैं. डेंड्राइट्स ट्रांसमिट करते हैं नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी. डेंड्राइट्स में a neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrites, and axon. Cell body, dendrites, and axon. The cell body contains cytoplasm with the cell organelles and certain granular bodies called as the nucleus granules. Short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body are called also contain nucleus granules and are called dendrites. Also contain nucleus granules called dendrites. These fibers transmit impulses towards the cell body. The axon is a long fiber, the distal end of which is branched. Each branch terminates as a bulb-like structure called as a synaptic knob, which possesses synaptic vesicles containing the chemicals called as the neurotransmitters. The axon transmits neural impulses away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular junction, or also called motor and palate. Based on the number of the axon and the dendrites, the neurons are divided into three types: multipolar, bipolar, and the unipolar. Multipolar with one axon and two or more dendrites found in the cerebral cortex. Bipolar neuron with one axon and the one dendrite found in the retina of the eye. Unipolar with only one axon found in the embryonic stage. There are two types of the axon, namely myelinated and the non-myelinated. The myelinated nerve fibers are enveloped by the Schwann cells which form a myelin sheath around the axon. The gaps between two adjacent myelin sheaths are called as nodes of Ranvier. Myelinated nerve fibers are found in the spinal and the cranial nerves. Unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form the myelin sheath around the axon and is commonly found in the somatic and the autonomous neural system. Somatic and autonomous neural system.
generation and the conduction of the nerve impulse. Neurons are the excitable cells because their membranes are in a polarized state. When the neuron is in a resting state, जब neuron rest state में, तो उसका membrane already polarized form में होता है. Therefore they are excitable cells because their membranes are in polarized state. वो polarized state में होते हैं because of the concentration gradient of certain ions like sodium, potassium and the negatively charged proteins. सोडियम ज़्यादा होता है बाहर, अंदर होता है पोटेशियम भी ज़्यादा, लेकिन नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स भी ज़्यादा होते हैं अंदर. देयरफॉर इन रेस्टिंग स्टेट में जो इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है, एक्सॉन मेम्ब्रेन या न्यूरॉन मेम्ब्रेन के इनसाइड, वो होता है नेगेटिवली चार्जड बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स. आउटसाइड द मेम्ब्रेन होता है पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज एनी पॉजिटिव आयंस की वजह से बाहर होता है ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज. उसके ये जो पॉजिटिव चार्ज बाहर और नेगेटिव चार्ज अंदर, इसको मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप जो 2 पोटेशियम को अंदर भेजता है और 3 सोडियम को बाहर. 2 पोटेशियम को अंदर और 3 सोडियम, जिसकी वजह से बाहर रहता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज एंड अंदर रहता है हमेशा नेगेटिव चार्ज. न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट. डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ a neuron is polarized? Different types of the ion channels are present on the neural membrane. These ion channels are selectively permeable to the different ions. When a neuron is not conducting any impulse that is resting, the external membrane is comparatively more permeable to the potassium ions, more permeable to the potassium ions more comparatively. When the nerve impulse is in resting, that is not conducting any impulse, the axonal membrane is more permeable, comparatively more permeable to the potassium ions and nearly impermeable to the sodium. Similarly, the membrane is impermeable to the negatively charged protein present in the exoplasm. Consequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration of K positive and negatively charged proteins and low concentration of Na positive. In contrast, the fluid outside the axon contains low concentration of K positive, high concentration of Na positive, and thus form a concentration gradient. These ion gradients across the resting membrane are maintained by the active transport of the ions by the sodium potassium pump, which transports 3 sodium outside and 3 sodium outside and 2 potassium inside. 3 sodium outside and 2 potassium 3 sodium outside and 2 potassium inside. As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner membrane possesses a negative charge. Neurons are the excitable cell because their membranes are in a polarized state. Do you know why the membranes are? Because in the resting state, when the slightly periodic different in the resting potential, resting state में जब एक इम्पल्स जो न्यूरॉन होता है रेस्टिंग में, दैट इज वो जब वो कंडक्ट नहीं करता है कोई इम्पल्स, उस वक्त उसका जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है इट इज़ मोर परमेबल टू के पॉजिटिव एंड लेस परमेबल टू एनी पॉजिटिव. उसकी वजह से आउटसाइड द मेम्ब्रेन होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनी पॉजिटिव, इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ के पॉजिटिव प्लस हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स. उसकी वजह से आउटसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन ये होता है पोलराइज्ड इन अ रेस्टिंग स्टेट. ये पोलराइजेशन होती है बरकरार रहती है विद द हेल्प ऑफ अ सोडियम पोटेशियम पंप which actively transports 3 sodium outside and 2 potassium inside, which actively transports 3 sodium permeable to the potassium ion, more permeable to the potassium ion, comparatively more permeable to the potassium ion, and nearly impermeable to the sodium ion, impermeable to the sodium ion. Similarly, the membrane is impermeable to the negative charge, the protein negative charge, impermeable to negative, more permeable to potassium and more permeable to potassium, more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium. Similarly, the membrane is impermeable to negative charge protein present in the exoplasm. Consequently, the exoplasm inside the axon contains high concentration of K positive and the negative charge protein and the low concentration of Na positive. In contrast, the fluid outside the axon contains a low concentration of K positive, a high concentration of Na positive, and thus form a concentration gradient. These ion gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of the ions by the sodium potassium pump, which transports 3 sodium outside and 3 sodium outside and 2 potassium into the cell. As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface possesses a negative charge. In the resting state, negative charge, and therefore it is polar. The electric potential difference across the resting membrane potential is called as a resting potential. रेस्टिंग स्टेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कहते हैं हम रेस्टिंग पोटेंशियल. यू माइट बी क्यूरियस टू नो व्हाट अबाउट द रेस्टिंग स्टेट में जो हमारा मेम्ब्रेन होता है इट इज़ लाइक दिस. बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज, अंदर होता है नेगेटिव चार्ज. दिस इज द रेस्टिंग स्टेट. जब हमारे कोई इम्पल्स आता है, एक पॉइंट पे कोई इम्पल्स आता है, किसी फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पे इम्पल्स आया, वहाँ पे क्या होता है फिर वो पढ़ेंगे. यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग एन एक्शन. व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट साइट ए, से पॉइंट ए ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन एट साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम. जो सोडियम बाहर था वो सारा अंदर चला जाता है सोडियम. दिस लीड्स टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. उस पॉइंट ए पे रिवर्स होती है पोलैरिटी, क्योंकि जब एक पॉइंट पे फॉर से पॉइंट ए पे पोलराइज्ड एक रेस्टिंग
जो एक्शन होता है, जो रेस्ट में होता है, कंडक्शन नहीं करते कोई इम्पल्स की, उसके पास जब कोई स्टिमुलस पहुंचता है किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे परमेबिलिटी ऑफ सोडियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो सोडियम बाहर था वो अब अंदर जाएगा, जिसकी वजह से उस पॉइंट पे पोलैरिटी जो होगी रिवर्स हो जाएगी। जो बाहर था अभी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो रिवर्स होके बन जाएगी, बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। फिर होगा फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड। अगर हम नाम रखेंगे ए बी सी और डी, फ्रॉम इनसाइड हो जाएगा फ्लो करंट फ्रॉम ए टू बी, बाहर से होगा हो जाएगा सी टू डी, दस कंप्लीटिंग द सर्किट, दस कंप्लीटिंग द सर्किट, रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि अब होगी परमेबिलिटी, जब इसका मतलब जब कोई स्टिमुलस किसी पॉइंट पे पहुंचता है उस वक्त उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इम्परमेबिलिटी ऑफ सोडियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर जो पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव कन्वर्ट होता है, अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। रिवर्सिबल एट द साइड, the outer surface of the membrane becomes negative charge and the inner side becomes positive charge. The polarity of the membrane at side A thus reversed, hence depolarized. Therefore जब कोई स्टिमुलस किसी पॉइंट पे पहुंचता है उस वहाँ पे मेम्ब्रेन बन जाता है depolarized, depolarized. The electrical potential difference across the membrane at the site A is called as action potential. अब जो साइड ए पे नया पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसको हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। यही एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली नर्व इम्पल्स होता है जो इन द फॉर्म ऑफ करंट फ्लो करता है, इन द फॉर्म ऑफ करंट फ्लो करता है। The electrical potential difference across the plasma membrane at the site is called as the action potential, which is in fact termed as the nerve impulse at sites immediately at the action sites B has a positive charge on the outer surface and the negative charge on its inner surface. As a result, a current flows on the inner surface from A to B. Inner surface होती है current from A to B and outer surface होती है current flow from B to A. याद रखना है to complete the circuit of the current flow. Hence, the polarity at the site A is reversed and the action potential is generated at site B. Thus, the impulse that was generated at A now transmit arrives at B. The sequence is repeated along the length of the action and consequently the impulse is conducted. देखो अब जो साइड है इसको दूसरा स्टिमुलस रिसीव करना है, उसके लिए इसको वापस पोलराइज होना है। पहले हुआ पोलराइज, पहले था पोलराइज फिर डीपोलराइज हुआ, अब वापस रीपोलराइज, इसको रिपोलराइजेशन कहते हैं। देयरफॉर जब कंडक्शन होती है नर्व इम्पल्स की वहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं, पहले पोलराइजेशन, फिर होती है डीपोलराइजेशन और उसके बाद होती है पहले पोलराइजेशन किसकी वजह से होती है, जो हमने पढ़ा, बाहर होता है पॉजिटिव अंदर होता है नेगेटिव, सोडियम पोटेशियम पंप पोलराइज स्टेट को मेंटेन रखता है। फिर डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ, जब स्टिमुलस एक पॉइंट पे आया तो उस वक्त इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम पॉजिटिव ज़्यादा हुआ, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर सोडियम पॉजिटिव इंक्रीज हो गई, तो वहाँ पे हो गई सी डीपोलराइजेशन। अब होगी फिर से रीपोलराइजेशन, ताकि जो साइड ए हो वो वापस होगी तैयार फॉर रिसीविंग अनदर स्टिमुलस। अब कैसे होगी रिपोलराइजेशन, द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमेबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट। जो जब स्टिमुलस पॉइंट ए पे पहुंचा उस वक्त जो परमेबिलिटी ऑफ सोडियम इंक्रीज हुई वो बहुत कम टाइम के लिए इंक्रीज होती है। It is quickly followed by the rise in permeability of potassium within a fraction of a second. Potassium diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at the site of excitation, and the fibrous becomes once more responsive to the other. Repolarizing होती है उस वक्त permeability of potassium बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो पोटेशियम अंदर था वो अब बाहर जाएगा उस वक्त और वो अपनी पोलराइज्ड स्टेट को वापस रिगेन करेगा, जिसको हम रिपोलराइजेशन कहते हैं। पहले होगी पोलराइजेशन, उसके बाद होगी डीपोलराइजेशन, उसके बाद होगी रिपोलराइजेशन। पोलराइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, डीपोलराइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज, और रिपोलराइजेशन होगी परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम इंक्रीज, वो बाहर जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा पोटेशियम बाहर जाएगा, सिंपल। current flows from A to B बाहर से B to A. You might be curious about the mechanism of the generation of the neural impulse and when a stimulus is applied at the site A, the polarized membrane, the membrane becomes freely permeable to the sodium positive. This leads to the rapid influx of the Na positive followed by the reversal of the polarity at that site. That is, the outer surface of the membrane becomes negatively charged and the inner side becomes positively charged. The polarity of the membrane at the site A is thus reversed and hence depolarized. Hence depolarized. The electrical potential difference the plasma at the site A is called as the action potential and in fact is called as a nerve impulse. उसी action potential को nerve impulse कहता है। Sides immediately ahead B positive charge and the current flows on the inner surface from A to B and outer surface from B to A to complete the circuit of the current flow. Hence the polarity at the site is reversed. The action potential generated. Thus the impulse generated at A arrives at B. The sequence is repeated along the rise in the stimulus induced permeability of the Na positive is extremely short-lived. It is quickly followed by the rise in permeability of potassium. It is quickly followed by the rise in permeability of the potassium ions, which within a fraction of a second potassium diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at the site of excitation, and the fiber becomes once more responsive to further stimulus. अब ये फिर से तैयार हो जाता है दूसरे स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए, क्योंकि वापस ये पोलराइज हो जाता है। इट इज़ द मैकेनिज्म, दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन। कैसे हुआ जनरेट नर्व इम्पल्स, फिर ट्रांसमिट कैसे हुआ नर्व इम्पल्स, उसमें 3 स्टेप्स पढ़े हमने। डीपोलराइजेशन, सॉरी,
पहले पोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन, उसके बाद रीपोलराइजेशन. अब ट्रांसमिशन, एक नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है? इट्स वेरी इजी. Nerve impulse. A nerve impulse is transmitted from a neuron to another neuron through synapse. Synapse is a junction between a neuron. It's just a space. A synapse is formed by the membranes. एक synapse में क्या क्या आता है? It is formed by the membrane, presynaptic membrane, postsynaptic membrane, or these membranes may or may not be separated by a space. That space is called a synaptic cleft. That space may or may not be separated by synaptic cleft. Presynaptic membrane का होना ज़रूरी है, पोस्ट synaptic membrane का होना ज़रूरी है, synaptic cleft का होना ज़रूरी या नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द इम्पल्स. कौन सी इम्पल्स है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है. तो a nerve impulse is transmitted from one neuron to another through a junction called a synapse. A synapse is formed by the membranes of presynaptic neuron, membrane of postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a space called as the synaptic cleft. There are two types of synapses which are called electrical synapses and the chemical synapses. And electrical synapses membranes of pre and postsynaptic neuron बहुत क्लोज होते हैं, वहाँ पे कोई synaptic cleft नहीं होती और वहाँ पे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन बहुत फास्ट होता है. ऐसी फास्ट हो जाती है कि जैसे एक ही न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रही है इम्पल्स. केमिकल साइनेप्स में जो इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं वहाँ पे एक फ्लूइड, वहाँ पे एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं. और वहाँ पे जो इम्पल्स नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, इट ऑकर्स विद हेल्प ऑफ केमिकल जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. A nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through the junctions called synapses. Therefore, synapse is not a space. Synapse is not a space, it is a junction. Synapse में क्या क्या चीज़ आती है? Presynaptic membrane, postsynaptic membrane, synaptic cleft may or may not be present. A synapse is formed by the membranes of the presynaptic neuron, postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called as a synaptic cleft. There are two types: electrical synapse and the chemical synapse. And electrical synapse, the membranes of pre and post neuron are in very close proximity. Electrical current can flow directly from one neuron to another. Transmission across the electrical synapse is very similar to the impulse condition along a single axon. Impulse transmitted across an electrical synapse is very fast than across the electrical synapse. हमारी बॉडी में बहुत रेयर होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इलेक्ट्रिकल synapses are very rare in our system. Electrical responses are very rare in our system. Electrical responses are very rare in our system. At a chemical synapse, the membranes of the pre and post synaptic neuron are separated by a fluid-filled space. Fluid-filled space जिसको हम synaptic cleft कहते हैं. Therefore, synaptic cleft एक space नहीं है. It is not a gap. It is a fluid-filled space. Do you know that synaptic cleft to the post synaptic? Chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of the impulse at these synapses. That is chemical synapses. The axon terminals contain a vesicles called as synaptic vesicles, जिसमें chemicals होते हैं जिनको neurotransmitters कहते हैं. जब कोई impulse या action potential arrive होता है at the axon terminal, जो synaptic vesicles है ये move करते हैं towards the presynaptic membrane, उसके साथ fuse हो जाते हैं. फिर अपने synaptic vesicles में से neurotransmitters release होते हैं into the synaptic cleft. फिर ये neurotransmitters bind करते हैं with the receptors that are present on the postsynaptic neuron, जिसकी वजह से ion channels खुल जाती है और जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट हुआ वो एक्शन पोटेंशियल दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज केमिकल. अब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ ये इनहिबिटिंग हो सकता है, या तो ये प्रमोट मतलब अलो करेगा या तो नहीं करेगा. When an impulse action arrives at the action terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with the plasma membrane of the presynaptic membrane and releases the neurotransmitters into the synaptic cleft. The released neurotransmitters bind to the receptors present on the postsynaptic membrane. This binding opens the ion channels, allowing the entry of the ions which can generate new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excitatory or inhibitory. The new potential developed may be excitatory or inhibitory. It depends upon the type of the neurotransmitter releaser. It depends upon the type of the chemical or the neurotransmitter releaser. It may be excitatory or it may be inhibitory. ऐसे होता है ट्रांसमिट ऑफ न्यूरल्स. सेंट्रल न्यूरल सिस्टम ब्रेन पढ़ना है ना. सेंट्रल न्यूरल सिस्टम
The brain is the central information processing organ of our body and acts as the command and the control system. It controls the voluntary all the movements, all the functions control. Brain controls all the functions. Circadian यहाँ पे है एक term that's 24. Circadian means हमारी जो 24 आवर रिदम होती है बॉडी की. Several endocrine glands and human behavior को भी कंट्रोल करता है ब्रेन ही. इट इज आल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, सब कुछ कंट्रोल करता है ब्रेन. इसमें क्या पढ़ना ही है, सब कुछ ब्रेन ही कंट्रोल करता है. द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. Inside the skull, the brain is covered by the cranial meninges. Inside the skull, the brain is covered by cranial meninges, consisting of an outer layer called as dura mater, a very thin middle layer. Middle layer होती है thin, याद रखना है, thick नहीं, thin होती है. Thin middle layer called as arachnoid, and an inner layer which is in contact with the brain tissue called as the pia mater. Dura mater, arachnoid, and the pia mater. From outside to inside, dura mater, arachnoid, and pia mater. DAP याद रखो, कुछ भी याद रखो. DAP, DAP, DAP from outside to inside, DAP. डैप. पायमेटर होता है इन क्लोज कंटेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू. अरेक्नॉइड होता है थिन मेम्ब्रेन. ड्यूरामेटर होता है आउटसाइड आउटर मोस्ट ड्यूरामेटर. उसके बाद अरेक्नॉइड, उसके बाद पायमेटर. द ब्रेन इज डिवाइडेड इन 3 मेजर पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन. द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द सिकल. सिकल होता है. उसके बाद क्रेनियल मेनिंजेस होते हैं. मेनिंजेस मतलब क्रेनियल मेम्ब्रेन्स, ब्रेन मेम्ब्रेन्स होते हैं 3: ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड एंड पायमेटर. DAP. DAP. Durameter, arachnoid, a very thin layer, and the pyometer, which is in close contact with the brain tissue. Circadian means 24-hour rhythm of our body. 24. Forebrain, midbrain, and the hindbrain. Forebrain, prosencephalon, midbrain, mesencephalon, and the hindbrain. तीन पार्ट्स, मेजर पार्ट्स होते हैं ब्रेन के: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. उनमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द cerebrum, thalamus, and the hypothalamus. Cerebrum, thalamus, and hypothalamus. Cerebrum forms the major part of the human brain. A deep cleft divides the cerebrum into two halves, which are termed as right and left cerebral hemisphere. These cerebral hemisphere are connected by a tract of nerve fibers called as corpus callosum. The layer of the cell which covers the cerebral is called as the cerebral cortex. Cerebral cortex में कौन से neurons present होते हैं? Multipolar. And is thrown into prominent folds. The cerebral cortex is referred to as the gray matter due to its grayish appearance. The neuron cell bodies are concentrated here, giving the color. क्योंकि cell bodies में नुक्लेus granules होते हैं, उसकी वजह से इसमें dark color आ जाता है या grey color. इसीलिए कहते हैं हम जो हमारा outermost cerebrum, पहले आता है cerebrum. The forebrain consists of 3 parts: cerebrum, थैलमस एंड द हाइपोथैलेमस. सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द फोर्थ ब्रेन या ह्यूमन ब्रेन. ए डीप क्लेफ्ट होता है जो डिवाइड करता है सेरेब्रम को दो हाव्स में, एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स के साथ कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ. ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर को कहते हैं हम कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स विच कनेक्ट्स राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर विद द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. सेरेब्रल हेमिस्फीयर की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल्स की, उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं. जो ग्रेइश अपीयरेंस होते हैं उसको ऑल देयरफॉर सेरेब्रल कॉर्टेक्स आल्सो कॉल्ड एज ग्रे मैटर, क्योंकि न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज यहाँ पे कंसंट्रेटेड होते हैं. गिविंग द कलर. द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड द लार्ज एरियाज दैट आर नाइदर मोटर इन फंक्शन और सेंसरी. उनको एसोसिएशन एरियाज, उनको कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कंट्रोल, neither sensory motor areas. The cerebral cortex contains motor areas and sensory areas, and the other areas that are neither sensory in function nor motor in function are called as association areas, which are responsible for complex function like intersensory association, memory and communication. Intersensory association, memory and communication. Intersensory association, memory and communication. Fibers of the tracts are covered with the myelin sheath, which constitute the inner part of the cerebral hemispheres. They give the opaque white color to the layer and hence called as a grey matter. या cerebral cortex के अंदर जो layers होते हैं cells के, उनको cerebrum के part ही होते हैं. Inner part of the cerebrum is white matter and the outer part is grey matter, क्योंकि inner part में axon होते हैं. axon में कोई cell bodies में axon के इर्द गिर्द myelin sheaths होते हैं, क्योंकि cranial और spinal region में myelinated nerve fibers पाए जाते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा. देयरफॉर उनकी वजह से उसका कलर ओपेक या वाइट आता है, उसको इसलिए उनको वाइट मैटर कहते हैं. सेरेब्रम में टोटल क्या आता है? राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कॉर्पस कैलोसम की वजह से वो जॉइन होते हैं. फिर पढ़ा हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कहते हैं हम ग्रे मैटर. क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूरॉन की सेल बॉडी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होती है. उसके बाद पढ़ा हमने सेरेब्रम में कुछ एरियाज होते हैं, सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज, कुछ एसोसिएशन एरियाज जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन
complex functions कंट्रोल करते हैं लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन कम्युनिकेशन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी एंड द कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने पढ़ा जो इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम होता है उसको कहते हैं हम वाइट मैटर, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं, क्योंकि एक्शॉन्स के इर्द गिर्द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से ओपेक कलर आ जाता है और उसको वाइट मैटर कहते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द फोरब्रेन इज द सेरेब्रम। द सेरेब्रम wraps around a structure called as a thalamus. सेकंड पार्ट इज द थैलेमस विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड द मोटर। जो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है ना मोटर और सेंसरी कंट्रोल। मोटर सेंसरी कहते हैं जो वहाँ से सिग्नल्स आते हैं, मोटर जो यहाँ से सिग्नल्स भेजते हैं मोटर सिग्नल्स, सेंसरी वहाँ से आते हैं, मोटर जो होते हैं रेगुलेटरी सिग्नल्स रेगुलेटरी इंपल्सेस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वो थैलेमस में ज़्यादा कुछ नहीं है, सेरेब्रम सेरेब्रम जिसके ऊपर होता है, सेरेब्रम जिसको कवर करता है उसको हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस इज अ सेंटर ऑफ मेजर, ये सिर्फ कंट्रोल करता है मोटर एंड सेंसरी फंक्शन, मोटर एंड सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेरेब्रम में प्रेजेंट होते हैं सेंसरी एरियाज मोटर एरियाज, ये कंट्रोल करता है उनको सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस को कौन, थैलेमस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ब्रेन का होता है जो थैलेमस के नीचे होता है, इसीलिए उसको हाइपोथैलेमस, हाइपो मीन्स बिलो, थैलेमस के नीचे उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। Hypothalamus lies at the base of the thalamus. The hypothalamus contains a number of centers which control body temperature. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है। कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग। बॉडी टेम्परेचर कौन करता है, अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग। जब लगता है प्यास लगती है उस वक्त कौन बताता है हमें प्यास लगी है, हमें पानी पीना है, अर्ज आती है खाने की पीने की, या बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी बहुत बार आया है क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर, सिंपल। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इसके अलावा हमको पता है इसमें कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रहते हैं, फिर वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज करते हैं, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक को डायरेक्टली कंट्रोल करता है, एक को हार्मोन, वो अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, the inner part of cerebral hemisphere, that is cerebrum, and a group of associated deep structures like amygdala. ये deep नहीं पढ़ना, amygdala किसे कहता है, हिपोकैम्पस के, बस याद रखना है। इनर पार्ट ऑफ cerebral hemisphere का इनर पार्ट, उसके साथ कुछ associated structures जो ब्रेन के कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स, इनर मोस्ट स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स लाइक amygdala है, हिपोकैम्पस है, along with the hypothalamus। एक तो इनर पार्ट ऑफ cerebral hemisphere और कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लाइक amygdala, हिपोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, ये तीन जो चीज़ें हैं मिलकर बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम फॉर्म्स द लिम्बिक लोब और द लिम्बिक सिस्टम। को लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम क्या आता है, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, डीप स्ट्रक्चर्स लाइक हिपोकैम्पस, एमिगडाला एंड हाइपोथैलेमस, इसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम और द लिम्बिक लोब। लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है फंक्शंस लाइक सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, दुख सुख, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड मोटिवेशन जो अभी हमको ज़रूरत है अभी एग्जाम के लिए, मोटिवेशन वो कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम और द लिम्बिक लोब। उसमें आते हैं इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उसमें आते हैं कुछ डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडाला, हिपोकैम्पस, उसमें आता है हाइपोथैलेमस। लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। Along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of the sexual behavior, emotional excitement, rage, pleasure, motivation, बहुत important, excitement, pleasure, rage and motivation, fear, डर वर सब, खुशी, गम, जल्दबाजी, फिर डरते हैं इसी से। मिड ब्रेन, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस of or hypothalamus of the forebrain and the ponus of the hindbrain, thalamus or hypothalamus of the forebrain and the ponus of the hindbrain। a canal called cerebral aqueduct pass through the midbrain। midbrain में क्या याद रखना, पहले इसकी लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द फोरब्रेन एंड द फोरब्रेन को आखिरी पार्ट कौन होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन एंड द पोन्स ऑफ द हाइंडब्रेन। इसमें एक डक्ट पास होती है जिसको हम सेरेब्रल एक्विडक्ट कहते हैं, मिड ब्रेन से पास होती है। ये आएगा सीधे क्वेश्चन, सेरेब्रल एक्विडक्ट कहाँ से पास होती है, सीधे मिड ब्रेन से पास होती है। इसके अलावा इसमें कुछ डॉर्सल पोर्शन में, वहाँ पे आएगा डॉर्सल या वेंट्रल, कुछ कंफ्यूज करके वहाँ पे पूछ सकता है एग्जामिनर। डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 स्वेलिंग 3 स्वेलिंग पूछ सकता है, डॉर्सल को वेंट्रल बना सकता है, याद रखना है। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंडेड स्वेलिंग जिनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं लिखे हैं टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक को स्टिक रहेंगे हम। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होते हैं प्रेजेंट, these are 4 swellings, round swellings that are present on the dorsal side of midbrain, corpora quadrigemina, यहाँ पे ड्र पे जो थोड़ा सा फोकस किया, डॉर्सल क्वाड्रिजेमिना, डॉर्सल कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना डॉर्सल
Dorsal side. The dorsal portion of the midbrain consists of media forearm siblings called as the corpora quadrant and hindbrain. The hindbrain consists of the pons cerebrum and the medulla oblongata, also called pons consists of the fiber tracts that enter in different pons का function होता है इसमें होते हैं फाइबर जो different parts of the brain को आपस में interconnect करता है pons consists of the fiber tract that cerebellum का कुछ अजीब ही function होता है यहाँ पे कुछ different cerebellum cerebellum has a very convoluted surface. In order to provide additional space for many more neurons, the medulla of the brain is connected to the spinal cord. The medulla contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes and the gastric secretion. Cardiovascular इसके अलावा जो गंदे गंदे काम होते हैं वो medulla control करता है, like micturition, like vomiting, like defecation, urination, सारे control करता है कौन? medulla इसके अलावा करता है control respiration, cardiovascular reflexes and the gastric secretion. Respiration, cardiovascular reflexes and the gastric secretion control करता है medulla. cerebellum का स्ट्रक्चर कन्वोल्यूटेड होता है और वो प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स. पोनस में होते हैं फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. प्यारे मनमोहन पोनस मिड ब्रेन एंड द मिडुला. पोनस मिड ब्रेन एंड मिडुला. पोनस मिड ब्रेन एंड द मिडुला. पोनस मिड ब्रेन एंड द मिडुला आर कॉल्ड एज, उनको कहते हैं हम ब्रेन स्टम. प्यारे मनमोहन इट्स अ ट्रिक. प्यारे मीन्स पोनस, मनमोहन मन मीन्स मिड ब्रेन एंड मोहन मीन्स मिडुला ओब्लॉन्गेटा. इनको तीनों को इकट्ठे कहते हैं हम ब्रेन स्टम. ब्रेन स्टम कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन सिंपल. थोड़ा सा रिवाइज करें हाईलाइट के साथ. द फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. डीपली डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली इनटू हालोज एटम विद रेड नर्व. आसान है. ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर याद रखना है. कॉर्पस कैलोसम याद रखना है. फुल सेरेब्रल कॉर्टेक्स याद. आउटरमोस्ट इज ग्रे मैटर क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन सेल बॉडीज होते हैं कंसंट्रेटेड इन द कलर. इसमें होते हैं उसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड एसोसिएशन एरिया जो होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कंट्रोल करते हैं लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन. इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन याद रखना है. राइट कवर्ड द माइलिन शीथ व्हिच कंसिस्ट द इनर पार्ट ऑफ वो तो होता है इनर पार्ट होता है वाइट मैटर क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन प्रेजेंट होता है. सेरेब्रम रैप्स अराउंड कॉल्ड एज द थैलेमस. थैलेमस इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड द मोटर सेन. यहाँ पे इसके अलावा थैलेमस में कुछ याद नहीं रखना है. थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस इज द बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस कंट्रोल नंबर ऑफ सेंटर्स व्हिच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये याद रखना. इसके अलावा हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोस्क्लेटल सेल्स होते हैं जो स्क्रीट करते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स. इनर पार्ट ऑफ द cerebral hemispheres and associated with deep such like amygdala, hippocampus and along with the for the limbic system. Along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of the sexual behavior, emotional reaction, excitement, pleasure, rage, and fear and motivation. Excitement, pleasure, rage, fear, and motivation. Excitement, pleasure, rage, fear, and the motivation. Midbrain is located between the thalamus or hypothalamus of the forebrain and the pons of the hindbrain. A canal called cerebral active passes through the midbrain. The dorsal portion of the midbrain consists of the forearm swelling is mainly forebrain called as the corpora quadratum. The hindbrain consists of pons cerebellum and the medulla, also called as medulla oblong. Pons consists of the fiber that interact different parts of the brain. Cerebellum has a very convoluted surface in order to provide additional space to for many more neurons. Cerebellum and the medulla of the brain is connected to the spinal cord. The medulla contains the centers which control respiration, cardiovascular reflexes and the gastric secretion. Respiration, cardiovascular reflexes and the gastric secretion. Respiration, cardiovascular reflexes and the gastric secretion. Cardiovascular reflexes and the gastric secretion. The three main regions, the Pyare, Manmohan, Pons, midbrain and the medulla are collectively called as brain stem. For the brain stem, Pyare, Manmohan, brain stem. रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ाने जाते हैं अभी. सेंस ऑर्गन्स में पढ़ेंगे हम पहले. सेंस ऑर्गन्स. We smell things by our nose, taste by tongue, hear by ear and see objects by eyes. ओहो ये पता ही नहीं था मुझे अभी तक. The nose contains mucus coated. Very important sentence. पहले ही सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा. mucus coated. जो रिसेप्टार्स होते हैं वहाँ पे म्यूकस होता है प्रेजेंट. म्यूकस कोटेड रिसेप्टार्स. द नोज कंटेन्स म्यूकस कोटेड रिसेप्टार्स व्हिच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल एंड कॉल्ड olfactory receptors. Therefore olfactory receptors are mucus coated receptors. Olfactory receptors are mucus coated receptors. Mucus coated receptors. These are made up of olfactory epithelium that consists of three kinds of cells. यहाँ पे लिखा नहीं है epithelium कौन सी सेल है लेकिन लिखा है three kinds of cells. These are made up of olfactory epithelium. Olfactory receptors are mucus coated and are made up of olfactory epithelium consists of three kinds of cells. The neurons of the olfactory epithelium extend from the outside environment directly into appear a broad bean-sized organs called as olfactory bulb, which are the extents or the brain's limbic system. जो अभी पढ़ा limbic system inner parts of the cerebrum along with the deep structures like amygdala, hippocampus वही पे बना
बनाते हैं. Olfactory जो बल्ब होता है, it is a part of limbic lobe or limbic system. Olfactory bulb, which are the extensions of the limbic lobe or limbic system. Limbic lobe or limbic system. Nose contains mucus coated receptor, they are called as olfactory receptors. Olfactory receptor is composed of olfactory epithelium, जिसमें 3 kinds of cells होते हैं. Olfactory epithelium होता है extend from the outside environment into a broad bean-sized organs called olfactory bulb, which are the extensions of the brain's limbic system. Both nose and tongue detect dissolved chemicals. The chemical senses of gustation and the olfactory are functionally similar and interrelated. Both nose and tongue detect the dissolved chemicals. Both nose and tongue detect dissolved chemicals. The chemical senses of the gustation, taste. The chemical senses of the gustation, that is taste, and the olfaction, that is smell, are functionally similar and interrelated. The tongue detects tastes through the taste buds containing the gustatory receptors. With each taste of the food or sip of drink, the brain integrates different input from the taste buds and a complex flavor is perceived. In the following sections, we will be introduced to the structure and the functioning of the eye sensory organ for vision and the ear sensory organ for the hearing. हमने पढ़ा nose gustatory receptors और olfactory receptors जो होते हैं वो functionally similar और interrelated होते हैं उनकी function. The tongue detects the taste buds containing gustatory receptors with each flavor is perceived. Nose contains the mucus coated. The nose contains mucus coated receptors which are responsible for receiving sense of smell called as olfactory receptors. They are called as olfactory effluent consists of 3 kinds of cells. मैं बोल जाता हूँ तो 3 kinds of cells. 3 kinds of cells. The neurons of the olfactory epithelium extend from the outside environment into a broad bean-shaped organ called the olfactory bulb, which are the extensions of the brain limbic system. Both nose and tongue dissolve chemicals. The chemical senses of the gustation and the olfaction are functionally similar and interrelated. The tongue detects the taste through the taste buds containing the gustatory receptors. With each taste of the food or the sip or drink, the brain integrates different input from the taste buds and a complex flavor is perceived. Our eyes are located in the sockets of the sickle called as orbits. Our eyes are located in the sockets of sickle. They are called as orbits. A socket of sickle bones or orbits are called as orbits. Orbits. A brief account of structure and the functions of human eye is given in the following section. The adult human eyeball is nearly spherical. The wall of the eyeball is composed of 3 layers. The outermost layer, the external layer, is composed of dense connective tissue and is called as sclera. The outermost layer is called dense connective called as sclera. The anterior portion of this layer is called as cornea. The middle is called as choroid, which contains many blood vessels and nerves and looks grayish in appearance. Bluish appearance. जो outermost layer होता है, external layer of the eyeball, that's called as sclera. It consists of dense connective tissue. The anterior portion of sclera is called as cornea. Simple. Second layer is the choroid. Middle layer is the choroid, which contains many blood vessels, जिसकी वजह से इसका appearance या इसका color bluish होता है. The choroid layer is thin. Very important. The choroid layer is thin. The choroid layer, वहाँ पे भी middle layer जो हमने cranial meninges पढ़ी, arachnoid भी, वो भी middle layer थी, वो भी thin थी. यहाँ पे भी है choroid middle layer, ये भी thin है. Arachnoid, choroid. The choroid layer is thin over the posterior 2/3 of the eyeball, but it becomes thick in the anterior part. Posterior 2/3 जो होता है eyeball में, जो choroid होती है, वो होती है thin. फिर ये जब anterior version में पहुंचती है, वहाँ पे बन जाते हैं thick and forms the ciliary body to form the ciliary body. Therefore, ciliary body is formed in the second layer, the choroid. Ciliary body itself consists for a pigmented and the opaque structure called as iris. Ciliary body फिर आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं एक pigmented and the opaque structure जिसको हम iris कहते हैं. Pigmented and opaque structure, that's called as iris. Pigmented and the opaque structure called the iris, which is the visible colored portion of the eye. The visible colored portion of the eye is formed from the ciliary body, which is in turn formed from the middle thin layer called as the choroid. Choroid जो होती है वो bluish appearance होती है because of the blood vessels वहाँ पे present होते हैं बहुत सारे choroid में. कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती है. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉर्निया रिसीव्स ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर.
इसलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के दौरान हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हमें ब्लड ग्रुप चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कॉर्निया और ब्लड का कोई संबंध ही नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्टली रिसीव्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोराइड, यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला गया है कि कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती है। सिंपली बोला गया है कि कोराइड जो लेयर होती है, मिडल थिन लेयर, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस ब्लूइश हो जाता है। पहले टू थर्ड जो पॉजिटिव रीजन होता है वहाँ पे तो थिन होती है, लेकिन जो एंटीरियर रीजन में पहुँचती है वहाँ पे थिक बन जाती है। और सीलियरी बॉडी, फिर सीलियरी बॉडी आगे पहुँच के बनाती है एक विजिबल कलर्ड पोर्शन, या जो ओपेक होता है उसको हम इरिस कहते हैं। इरिस इज द विजिबल colored portion of the eye that is formed from the ciliary body in the anterior region. The eyeball contains a transparent crystalline lens which is held in place with the ligaments attached to the ciliary body. Attached to the ciliary body. In front of the lens, the aperture surrounded by the iris is called as the pupil. The aperture surrounded जो जगह iris बंद करती है या aperture the surround करती है iris, उनको कहते हैं pupil. Pupil is an opening. Simple. It is an opening. It is an opening. Simple. बात एक opening. The diameter of the pupil is regulated by the muscle fibers of iris. The diameter of the pupil हम जो हमारा आई बॉल के सामने होता है एक लेंस, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टाइन लेंस, जो हेल्ड इन प्लेस होता है विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी। इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है एक स्ट्रक्चर, एक अपर्चर होता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल इज सराउंडेड बाय द इरिस। द डायमीटर इरिस इज सिंपली प्यूपिल इज सिंपली एन ओपनिंग। द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज regulated by the muscle fibers of the iris, by muscle fibers of iris, nerve fibers ki muscle fibers of iris, muscle fibers of iris visible. Iris is the pigmented and the visible colored portion of the iris is the visible colored portion of the pigmented and opaque. बहुत सारे points important हैं। pigmented होता है, opaque होता है, visible colored portion of the eye होता है। कौन? iris हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। Orbit are located in sockets called as the orbits. A brief account of the structure and the function. The adult of the human is nearly spherical structure. The wall of the eyeball is composed of 3 layers. The external layer is composed of the dense connective tissue, and is called as the ciliary. Outer dense connective is called as ciliary. The anterior portion of it is called as the cornea. Anterior portion is called as the cornea. The middle layer called as the choroid contains many blood vessels and looks bluish in color. The choroid layer is thin in the posterior two-third. posterior two-third of the eyeball में जो cornea, जो choroid होता है वो thin होता है, two-third में होता है thin। फिर ये anterior region में बनता है thick and forms the ciliary body. Anterior region में बनता है thick and forms the ciliary body becomes thick, but it becomes thick in the anterior part to form the ciliary body. The ciliary body continues further to form the iris. The inner layer जो part में, that is the retina, very important layer जहाँ पे image बनती है, जो सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अब तक आए हैं रेटिना में से। पिछले साल भी शायद आया था रेटिना में से क्वेश्चन, ऑप्शन रेटिना। द इनर लेयर इज रेटिना एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 layers from outside to inside. It's PUBG, photoreceptor cells, bipolar cells, and the PUBG ganglion cells. From inside outside, from outside to inside मैंने याद रखा है PUBG, from outside to inside रखा है याद, PUBG outside to inside मैंने पहले याद रखा है PBG, photoreceptor cells, bipolar cells, and ganglion cells. From inside outside यहाँ पे लिखा गया है। There are 2 types of the photoreceptor cells, namely rods and cones. There are 2 types of photoreceptor cells, that are rods and cones. These cells contain light sensitive protein. Light sensitive protein is called as photopigments. The daylight photopic vision and the color vision are the functions of cones. Daylight जो दिन में हम देखते हैं वो, that is the function of cones. And the twilight scotopic vision शाम को dawn dusk type के देखते हैं, twilight or scotopic vision is the function of the rods. The rods contain a purplish red protein. Rods contain a purplish red protein called as rhodopsin or visual purple. Rods contain a purplish red. It is purplish red. याद रखना है purplish red इसका color, very important question बन सकता है। purplish red. The rods contain a purplish red protein called as the visual purple or rhodopsin. Visual purple नाम क्या है? और visual purple or rhodopsin, which contains the derivative of the vitamin A. In the human eye there are 3 types of the cone. Rods controls the cones controls the daylight or the visual daylight or color vision. Color vision. And the rods control the scotopic or twilight vision is the function of the rods. Rods contain a reddish
red, purplish red protein called as visual purple or rhodopsin, which contains visual purple rhodopsin, which contains a derivative of vitamin A, In the human eye, there are three types of the cones which possess their own characteristic photopigments, that is red and the green, blue, light. The sensation of the different colors are produced by the various combination of these colors, basic colors, red, green, and blue कोन्स होते हैं प्रेजेंट when these cones are stimulated equally a sensation of white light. जब तीनों cones equally stimulate होते हैं, जब कोई stimulate नहीं होते तब तो black बनेगा, जब equally stimulate होते हैं तब white color बनता है या white light perceive होती है. इसी तरह different combinations में बनाते हैं different colors red, green and the blue cones. हमारे cell eye में total 3 types of cones present होते हैं, red cone, blue cone and the green cone. The inner layer is the retina and contains three layers of the cell, three layers of neural cells. From outside, inside its photoreceptor cells, its bipolar cell, its ganglion cell, There are two types of photoreceptor cells. Photoreceptors होते हैं दो types के, एक होते हैं rods and the second one is cones. Rods and cones होते हैं. Cones control the color vision or the color vision, daylight vision or photopic vision, whereas rods control the scotopic or the twilight vision. Rods contain a purplish red protein called as visual purple or rhodopsin, which contains a derivative of vitamin A, There are three types of the cones: red cone, green cone, and blue cone. Red cone, green cone, and blue cone, which produce different colors by showing different combinations. For example, a white color is perceived when all the three cones are stimulated equally. It's the structure of the retina in the next layer. Structure of the eyeball का structure था. There are three layers outside, from inside, outside ganglion cells, bipolar cell, photoreceptor cells. ये याद रखना, outside inside PUBG याद रखा है मैंने, outside inside PUBG याद रखा है, outside PUBG खेलते हैं लोग. Rods and cones, they contain the light sensitive protein called as the photopigment is the daylight, photopic vision, color vision are functions of cones, whereas the twilight or photopic vision is the functions of the rods. The rods contain a purplish red protein called as the rhodopsin or the visual purple, which contains the derivative of vitamin A. In human eye, there are three types of cones, that is red, green cone. Sensation of white light is produced when all the cones are stimulated equally. Sensation of white light is produced when all the cones are stimulated equally. Sensation of white light is produced when all the cones are stimulated equally. The optic nerves leave the eye and the retinal blood vessels enter it. एक ही पॉइंट पे optic nerves leave करते हैं और retinal blood vessels enter करते हैं eye को at a point medial to and slightly above the posterior pole. अगर eyeball है above, ये है posterior pole, यहाँ पे होता है ये, जहाँ पे optic nerves leave करते हैं और retinal blood vessels enter करते हैं. Enter it at a point medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball. Photoreceptor cells are not present in that region. इस region में कोई photoreceptor cell present नहीं होते हैं. Photoreceptor cells are not present in that region and hence is called as blind spot. At the posterior pole of the eyeball, lateral blind spot के lateral side में, adjacent side में जो another posterior pole side में होता है, there is a yellowish pigment spot called as the macula lutea. Yellowish pigmented spot called as macula lutea with the central pit called as the fovea. Fovea is a thinned out portion of the retina, where only the cones are densely packed, where the visual acuity or resolution is greatest. दो पॉइंट होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट. इट्स एक्चुअली येलो स्पॉट है यहाँ पे, मैक्यूला ल्यूटे कहते हैं. येलो स्पॉट को मैक्यूला ल्यूटे कहते हैं. वहाँ पे एक थिन सेंट्रल पिट होता है दोब कशर पे, उसको बोलते हैं फोविया. फोविया इज एक्चुअली द थिनड आउट पोर्शन ऑफ द आई. सेंट्रल पिट कॉल्ड द फोविया. द फोविया इज द थिनड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना where only the cones are densely packed. The resolution of this point is maximum, is greatest. It is the point where the visual acuity or the resolution is greatest. The optic nerves leave the eye and the retinal blood cells enter it at a medial point above the posterior pole of the above. Photoreceptor cells are not present at that point. It's called as the blind spot. At the posterior pole, lateral to the blind spot, is another pigmented yellowish spot called as macula lutea, with a small pit called as the fovea. Fovea is actually the thinned out portion of the eye where only the cones are densely packed. The visual acuity of this point is greatest, or visual acuity or resolution of this point is greatest. The space between the cornea and the lens present होता है वहाँ पे aqueous chamber. Thin water fluid called as aqueous humor. Aqueous humor is actually a water fluid. The chamber, the space between the cornea and the lens is called as the aqueous chamber, filled with the water fluid called as the aqueous humor. Similarly, the space between the lens and the retina is called as the vitreous humor. It's filled with the fluid called as the vitreous chamber. It is filled with the space jelly-like fluid called as vitreous humor. Transparent gel होता है, जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं.
The optic nerves leave the end and the retinal blood vessels enter at a point medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball. Post photoreceptors are not present in the retina and hence it's called as a blind spot. At the posterior pole, lateral to the blind spot is the yellowish pigmented spot called as the fovea macula lutea with a central pit called as the fovea. Fovea is actually a thin outer portion of the eye. Only the cones are present and densely packed. It is the point where the visual acuity or the resolution is greatest. The space between the cornea and the lens is called as the aqueous chamber, filled with a thin water fluid called as the aqueous humor. The space between the lens and the retina is called as the vitreous chamber and is filled with a transparent gel called as the vitreous humor and is filled with a transparent gel called as vitreous humor and is filled with a transparent gel called as the vitreous humor and is filled with a transparent gel called as the vitreous humor. Mechanism of vision. The light is in the visible wavelength focused on the retina through the cornea and the lens. पहले आता है cornea, फिर lens, फिर retina पे जब light पड़ती है उससे क्या होता है? Generate potentials, that is impulse जो अभी पढ़ा हमने. In the rods and the cones, because rods are photoreceptor cells, neurons होते हैं ना वहाँ पे bipolar ganglion neuron cells से जब सिंपली न्यूरो इम्पल्स जनरेट होगी फिर कंडक्ट होगी जो अभी हमने पढ़ा. एज मेंशन अर्लियर द फोटोसेंसिटिव कंपाउंड जो होते हैं फोटोपिगमेंट रॉड्स एंड कोन्स में is composed of in the human eye is composed of opsin, a protein and a retinal which is an aldehyde of vitamin A. retinal opsin retinal. लाइट से जब लाइट पड़ती है इन फोटोपिगमेंट से डिसोसिएशन होता है फोटोपिगमेंट्स का इनटू द ऑप्सिन एंड द रेटिनल. इस डिसोसिएशन की वजह से मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज आती है. उस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और वो ट्रांसफर होता है. एज पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेट इन द फोटोरेसेप्टर cells, these produces a signal that generates action potentials in the ganglion cells through the bipolar cells. These action potentials are transmitted by the optic nerves to the visual cortex area of the brain where the nerve impulses are analyzed and the image formed on the retina is recognized based on early memory and experience. Similarly, mechanism of vision, जब visible wavelength हमारे retina पे पड़ती है through the cornea and passing through the cornea and the lens, retina पे जो photopigments होते हैं उनकी dissociation हो जाती है into the opsin and the retinal. The dissociation causes the membrane permeability change जिसकी वजह से nerve impulse या action potential generate होता है. This action potential is then transmitted by the neurons, bipolar neuron, ganglion neuron से, bipolar neuron से जो photoreceptor cells या फोटोरेसेप्टर न्यूरॉन्स की मदद से वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो फिर ट्रांसमिट किया जाता है टुवर्ड्स द विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन जहाँ पे इमेज को एनालाइज किया जाता है बेस्ड ऑन द अर्ली मेमोरी एंड द कम्युनिकेशन एंड इमेज इज फॉर्म्ड. Rhodopsin. Therefore, rhodopsin जो प्रोटीन होता है फोटोपिगमेंट इट्स कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन अ प्रोटीन एंड ऑप्सिन अ प्रोटीन एंड रेटिनल एंड aldehyde of vitamin A retinol. The other invisible wavelengths are focused on the retina through the cornea and the lens generate action from here and the rods from the cones. As mentioned earlier, the photosynthetic photopigments in the human eye is composed of the opsin and protein and the retina and aldehyde of the vitamin A. Light induces the dissociation of the retina from the opsin, resulting in the change in the structure of the opsin. This causes membrane permeability changes. As a result, the potential differences are generated in the photoreceptor cells. This produces a signal that generates the action potential in the ganglion cells through the bipolar cells. These action potentials are transmitted by the optic nerves to the visual cortex area of the brain, to the visual cortex area of the brain where the nerves are based on the early memory and experience. ये हुआ हमारा mechanism of vision भी complete. Structure of eye भी हुआ complete. Structure of ear थोड़ा सा हट के है. Structure of ear the ear performs two functions. eye तो एक ही function perform करती है, that is vision, but the ear performs two functions, that is vision, that is एक तो hearing and balancing. Very important, hearing and the maintenance of the balance. पढ़ेंगे फिर थोड़ा सा highlight करके revise करेंगे. Anatomically, the ear can be divided into three major sections: outer ear, middle ear, and the inner ear. Outer ear consists of the ear pinna and the external auditory meatus, that is canal. The pinna collects the vibrations in the ear which produces the sound. The external auditory meatus leads inwards and extends up to the tympanic membrane. External auditory meatus जो vibrations collect करते हैं, sound waves collect करता है pinna, वो transmit करता है towards the eardrum, जिसको हम tympanic membrane कहते हैं. There are very fine hairs and wax secreting glands in the skin of the pinna and the meatus. Fine hairs भी होते हैं और wax secreting glands भी
भी होते हैं, बोथ पिन्ना में भी और एक्सटर्नल ऑर्टरी मीटस में भी. द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद कनेक्टिव टिश्यू. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं वो बना हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू आउटसाइड और आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं विद स्किन with hair, skin outside with and mucus in membrane inside, skin on outside, mucus membrane on inside, skin on outside and the mucus membrane inside, skin on outside and the mucus membrane on the inside. आउटर ईयर में आते हैं पिन्ना एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जिसको हम कनाल भी कहते हैं. ये पिन्ना कलेक्ट्स द वाइब्रेशंस दैट प्रोड्यूसेस द साउंड, कलेक्ट करता है साउंड वेव्स इन द ईयर. और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है ये इन वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं. बोथ द पिन्ना एज वेल एज द ऑडिटरी मीटस जिसको हम ईयर कनाल भी कहते हैं दोनों में प्रेजेंट होते हैं हियर्स एंड द वैक्स क्रिएटिंग ग्लैंड्स. जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो बना हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू का, आउटसाइड होता है प्रेजेंट स्किन एंड इनसाइड होता है प्रेजेंट म्यूकस मेम्ब्रेन. अब पढ़ेंगे मिडल ईयर. मिडल ईयर में सिंपली 3 ऑसिकल्स आते हैं जिनको हम मेलियस इनका स्टेपिस कहते हैं जो एक दूसरे के साथ सीरियली अरेंज्ड एक दूसरे के साथ इन टच होते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है? chain like Malleus is attached to the tympanic membrane and Malleus is attached to the tympanic membrane and the stapes. Malleus and the stapes is attached to the oval window of the cochlea. Cochlea is the inner ear. Cochlea is the inner ear. Oval window of the cochlea. Oval window. हमारी जो हमारे जो कान है उनमें भी खिड़कियाँ होती हैं. ओवल विंडो, राउंड विंडो. ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया के साथ कनेक्ट होता है कौन? स्टेपिस. याद रखना है. The ear ossicles increases the efficiency of the sound waves to the inner ear. Increases the efficiency of the sound wave. उनका function होता है वो increases the efficiency of the sound waves to the inner ear. An eustachian tube connects the middle ear with the pharynx. The eustachian tube helps in equalizing the pressure on the two sides of the ear drum. Simply, the middle ear consists of 3 ossicles, malleus, incus, and stapes. Malleus, incus, and stapes, which are serially arranged. The malleus is attached to the tympanic membrane, mucous membrane of the tympanic membrane, and the stapes is connected to attached to the oval window of the cochlea or the inner ear. These three ossicles increases the efficiency of the sound waves to the inner ear. An eustachian tube is also present in the middle ear, which connects middle ear with the pharynx and helps in equalizing the pressure on the two sides of the eardrum or the tympanic membrane. eustachian tube का function ये होता है, it helps in equalizing the pressure on the two sides of the eardrum or the. यहाँ पे याद रखना स्ट्रक्चर थोड़ा सा. पहले मेलियस फिर इनका स्टेपिस के साथ होता है ओवल विंडो. फिर यहाँ पे है कॉक्लिया, कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर नर्व. eustachian tube ये pharynx से कनेक्ट करेगा. tympanic membrane तो पता ही बाहर से स्किन, अंदर से mucous membrane. external auditory canal इस पे होते हैं mucous wax gland. It was two functions: hearing and the maintenance of the body balance. Outer ear तो पता ही pinna and external auditory means pinna collects the vibration that produces external auditory means external tympanic membrane तो पता ही ये important है. They are very fine hairs in the vaccinating glands in both skin of the pinna and the medius. Skin of the pinna, there are very fine hairs in the vaccinating glands in the skin of the pinna and the medius. The pinna membrane is composed of connective tissue with skin on outside याद रखना है and the mucous membrane inside. Skin on outside, mucous membrane inside. The middle ear contains 3 ossicles, malleus, incus, and stapes, which are attached to one another in a chain-like fashion. The malleus membrane and the stapes is attached to the oval window of the cochlea of the inner ear. The ear ossicles increase the efficiency of the transmission of the sound waves to the inner ear. The eustachian tube connects the middle ear with the pharynx. The eustachian helps in equalize the pressure on the two sides of the eardrum. थोड़ा सा जो inner ear है थोड़ा सा complex है. inner ear को cochlea कहते हैं. It's the fluid-filled inner ear called a labyrinth. inner ear को कहते हैं हम labyrinth. It is fluid-filled. inner ear होता है fluid-filled. The fluid-filled inner ear called labyrinth consists of two parts: the bony labyrinth और membranous labyrinth. इसमें दो types of fluids होते हैं, endolith और पेरिलिफ. bony lymph में होता है पेरिलिफ, endolith होता है membranous labyrinth and the bony labyrinth. The bony labyrinth is of channels. Inside these channels lies the membranous labyrinth, which is surrounded by a fluid called as the periliph. The membranous labyrinth is filled with a fluid called membranous labyrinth. Bony labyrinth होता है पेरिलिफ में, bony labyrinth होता है पेरिलिफ में, और membranous labyrinth होता है fill with the endolith, periliph and the endolith. The coiled portion of the labyrinth is called as the cochlea. The membrane is constituting the cochlea, the Resteners membrane, and the basilar, dividing the surrounding periliph-filled bony labyrinth into an upper scala vestibule and a lower tympani. Scala vestibule, scala tympani, scala media, 3 layers होते हैं. जो bony labyrinth होता है the periliph-filled bony labyrinth याद रखना है. The periliph-filled bony labyrinth is divided into scala vestibule, scala media, and the scala tympani with the help of 3 membranes: cochlea, Resteners, and the basilar membrane. Cochlea, Resteners, and the basilar membrane. Cochlea, Resteners membrane, and the basilar membrane. Cochlea, Resteners membrane. Basilar membrane के ऊपर होता है cochlea, Resteners membrane होता है present with VMT याद रखना और रखना है RB.
ये याद रखना है, VMTRB, VMTRB। वी मतलब स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनी। वेस्टिब्यूल और मीडिया के दरमियान होता है रेसिनर्स मेम्ब्रेन, रेसिनर्स मेम्ब्रेन। और मीडिया और टिम्पेनी के दरमियान होता है बेसिलर मेम्ब्रेन। इसी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है प्रेजेंट कॉक्लिया। कॉक्लिया की फंक्शंस आगे देखेंगे। VMT, vestibule media and tympani, vestibule media and tympani, vestibule media and tympani, vestibule media and tympani. The fluid inner space called as the labyrinth consists of the two parts, the bony and the membranous labyrinth. The bony labyrinth is a series of the channels. Inside these channels lies the membranous labyrinth. Membranous labyrinth is present inside the bony labyrinth. Bony labyrinth होता है पेरिलिप में और membranous labyrinth में होता है। bony labyrinth होता है पेरिलिप में और membranous labyrinth में होता है एंडोलिप। The fluid inner space called as labyrinth consists of two parts, the bony and membranous labyrinth. The bony labyrinth is stretched and inside these channels lies the membranous labyrinth, which is surrounded by a fluid called as the perilymph. The membranous labyrinth is filled with a fluid called as the endolymph. The coiled portion of the labyrinth is called as the cochlea. The coiled portion of the labyrinth is called as and the coiled portion of the labyrinth is called the cochlea. The membrane is constituted from the cochlea, Ressiner's membrane, and the basilar membrane. Divide the perilymph filled bony labyrinth into three regions: scala, vestibule, and the scala, lower scala, upper scala, vestibule, and the lower scala, tympani. Upper scala, vestibule, and the lower scala, tympani. Upper scala, vestibule, the space within the cochlea called as the scala media is filled with the endolymph. Within the cochlea is filled with endolymph. Is filled with endolymph. The scale within the cochlea is filled with endolymph. वहाँ पे पेरिलिम्फ होता है, स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया। द स्केला एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया, द स्केला वेस्टिब्यूल एंड्स एट द ओवल विंडो। स्केला वेस्टिब्यूल एंड्स एट द ओवल विंडो। स्केला टिम्पेनी एंड्स इन द राउंड विंडो। याद रखना है ओ आर वेस्टिब्यूल VMT ओ आर रेसिनर्स में, यहाँ पे रेसिनर्स, यहाँ पे बेसिलर्स मेम्ब्रेन। याद रखना है स्ट्रक्चर्स, याद रखने हैं लाइक हमारे पास में तीन स्ट्रक्चर होते हैं, V, फिर होता है M, फिर होता है T। यहाँ पे एक विंडो, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन, यहाँ से यहाँ पे होता है रेसिनर्स मेम्ब्रेन, यहाँ पे होता है बेसिलर्स मेम्ब्रेन, यहाँ पे होता है ओवल विंडो, यहाँ पे होता है राउंड विंडो। इसके अलावा यहाँ पे होता है एंडोलिम्फ और यहाँ सारे में होता है पेरिलिम्फ। याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, वेस्टिब्यूल, मीडिया, टिम्पैनी। At the base of the cochlea, the scala vestibule ends at the oval window. Scala vestibule ends at the oval window, whereas the scala tympani terminates into the round window, which opens to the middle ear. यहाँ से फिर middle ear होता है, यहाँ से middle ear। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके रखेंगे, जल्दी नज़र पड़े डायरेक्टली इसी पे, वो ज़्यादा पढ़ना ना पड़े डिटेल में। ये है रेस्टर, ये स्केला वेस्टिबल, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। यहाँ पे पेरिलिफ, यहाँ पे एंडोलिफ, यहाँ पे पेरिलिफ, स्केला इट्स द रेस्टर्स में, इट्स द बेसिलर में, बेसिलर में के ऊपर होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पढ़ना है और थोड़ा डिटेल में। Tectoral membrane, scala tympani, scala vestibule, scala media and scala tympani. Scala tympani, tectoral membrane होता है प्रेजेंट ओवर द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। आगे पढ़ेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। स्केला मीडिया एंड द रेसिनर्स मेम्ब्रेन पता है, स्केला वेस्टिब्यूल पता ही है। The organ of Corda is structure located on the basilar membrane, which contains hair cells that are act as auditory receptors. Very 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 important. Auditory receptors कौन करते हैं? Act hair cells that are present on the organ of Corda. The organ of Corda is located on the basilar membrane that contains hair cells which act as auditory receptors. That act as auditory receptors. The hair cells are present in rows on the inner side of, ये भी याद रखना है बहुत important, outer side नहीं, internal side of the organ of Corda. The hair cells are present in rows on inner side of the organ of Corda. The basal end of the hair cell is in close contact with the afferent nerve fibers. A large number of the processes called as stereocilia are present from the apical part of the each hair cell above the rows of the hair cells. A thin elastic membrane called as the tectorial membrane is a thin elastic membrane called as the tectorial membrane is a thin elastic membrane called as tectorial membrane. The organ of Corda is a structure located on the basilar membrane
which contains hair cells that act as auditory receptors. The hair cells are arranged rows on the internal side of organ of corti. The basal end of the hair cell is in close contact with the afferent nerve fiber where it's apical and forms various projections called as stereocilia. That are covered by a thin elastic membrane called as tectorial membrane. And the inner ear also contains a complex system called as the vestibular apparatus located above the cochlea. Cochlea के ऊपर, the cochlea is a coiled portion of the eye. ear cochlea के ऊपर जो present होता है एक apparatus जिसको vestibular apparatus कहते हैं. Vestibular apparatus में दो parts होते हैं. एक तो three semicircular canals and the second one is otolith. Three semicircular canals and otolith. हर कोई semicircular canal जो होती है it's perpendicular to each other. The membranous canals are suspended in the perilymph or the bony canals. जो semicircular canals होते हैं these are present in the perilymph of the bony canals, the bony labyrinth. The base of the canal is swollen and is called as ampulla, which contains the portion is called as the crista ampullaris, which has hair cells. The saccule and the utricle contain saccule and utricle otolith. देखो दो parts होते हैं vestibular apparatus में. एक तो तीन semicircular canals जो perilymph में present होते हैं और होते हैं perpendicular to each other. जो semicircular canal जो present होते हैं और जो semicircular canals का जो basal part होता है वो होता है swollen और उसके ऊपर एक ridge होता है जिसको हम crista ampullaris कहते हैं. Crista ampullaris होता है sensory part of जो help करता है in the balancing में. Sensory part of the semicircular canal. So vestibular apparatus is composed of two parts. एक तो तीन semicircular canals और होता है otolith. Semicircular canals जो होते हैं ये होते हैं present perilymph में और semicircular canals होते हैं perpendicular to each other. Semicircular canal का जो sensory part होता है it is crista ampullaris, वहाँ पे present होते हैं hair cells. इसी तरह otolith के दो sensory parts होते हैं utricle and saccule. Utricle and saccule are the sensory part of otolith. Utricle and saccule. Macula. Utricle and saccule होते हैं parts of the otolith होता है दो parts. Utricle and saccule. Macula होता है macula. Macula is the sensory part of otolith. Crista ampullaris is the sensory part of semicircular canals. These two sensory parts help in the maintenance of balance of the body. Simple. याद है मुझे, फिर रिवाइज कर रहा हूँ मैं खुद गुनगुना रहा हूँ. The inner contains a complex system called as the vestibular apparatus located above the cochlea. Vestibular apparatus is located above the cochlea. ये याद रखना है. Vestibular apparatus is located above the cochlea. The vestibular apparatus is composed of three semicircular canals and the otolith. Macule is the sensory part of the saccule and utricle. Each semicircular canal lies in a different plane at right angles to each. Different plane, not in the same plane but different planes at right angles. Each semicircular canal lies in different planes at right angles to each other. The membranous canals are suspended in the perilymph of the bony canal. The membranous canals are suspended in the perilymph of bony canals. The base of the canals is swollen and is called as the ampulla, which contains a projectile is called as a crista ampullaris, which has a hair cell. The saccule and the utricle contain a portion called as a macula. The crista and the macula are the specific receptors of the vestibular apparatus responsible for the maintenance of the balance of the body and the posture. Mechanism of hearing आसान है. कहाँ से? राउंड विंडो याद रखना. राउंड विंडो से फिर जो स्केला, वेस्टिबुल स्केला, मीडियन स्केला, टिम्पैनी के ऊपर जो बेसलर मेम्ब्रेन होता है, बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं हेयर सेल्स के नीचे बेसल पार्ट में होता है एफेरेंट नर्व फाइबर और हेयर सेल्स के एपिकल पार्ट में होते हैं स्टीरियोसीलिया. उनके ऊपर होता है थिन इलास्टोम जिसको हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं. जब नर्व फाइबर्स आते the external ear receives the sound waves and directs them to the eardrum. The eardrum vibrates, it responds to sound waves and then vibrations are transmitted through the ear oscillator to the oval window. The vibrations are then passed to the oval window on the fluid of the cochlea where they generate the waves in the lymph. The waves in the lymph induce a ripple in the basilar membrane. The movements of the basilar membrane bend the hair cells, pressing them against the tectorial membrane. As a result, nerve impulses are generated in the associated afferent neurons. These impulses are transmitted by the afferent fibers via the auditory nerve to the auditory cortex of the brain where the impulses are analyzed and the sound is recognized.